Good morning, guys. Now I'm starting with NSSA, not so stubby area. I think all of you are clear with this stuff that area types are present in OSPF just to filter LSAs. If you remember, I have told you 3 things about area types. Whenever somebody asks you what is stub area, you have to answer 3 things. First, it is used to filter type 4 and type 5 LSA. It is used to reduce the amount of database. Third thing, just to define reachability. What we have? A default route generated by ABR in form of which LSA? Type 3 LSA. Clear? Now guys, listen to me carefully. If I draw a what you call it in maths, Venn diagram. Boxes में represent करना है किसी चीज को. Now let's say this domain is in this area type 1 type 2, in this area type 1 type 2, this area information into this area type 3 generated by this area information into this area type. Now external domain information will be flooded throughout OSPF domain because we know type 5 LSAs are area independent. Clear? Now all of the routers know that ASBR, all of the routers in area 1 knows who is ASBR. The problem is in area 0. The problem is in area 0. Just to tell information of, or just to give information of ASBR in area 0, ABR will generate. This is type 5, this is type 4. Clear? All of you are clear with this stuff? Yes. Okay. Now, all of you know the meaning of stub? All of you know the meaning of totally stub. Done? Now guys, look here for the case. Let's say what is the design? This is the design. Done? क्या लिखा मैंने यहाँ? Done? Let's say here we are running rip. Fine. This is area. This is area 1. Clear? Here I have how many networks? 50 networks. By default R1 will generate how many type 5 LSAs? Yes, 50. All of you are clear with this thing? Why 50? Because one network is equal to one type 5 LSA. Now R2 will be forwarding type 5 LSAs in area 1 and R2 will also be generating type 4. All of you are clear with this thing? R2 type 5 को forward करेगा area 1 में और साथ ही साथ कौन सा LSA generate करेगा? Type 4. Clear? Now I have configured this area as stub. So from area 1 which LSAs will be filtered? 4 and 5. And ABR will be generating a clear to provide reachability. Yes or no? Yes, sir. Let's say with time what happened? We have to connect external domain here also. टाइम के साथ रिक्वायरमेंट आई कि R4 के से भी साथ भी क्या कनेक्ट करनी पड़ी?
With R4 we also have to connect external domain. Clear? This area was stub. Now the problem is R4 cannot act as ASBR. Cannot. Why? Area 1 is stub area. In stub area, type 4 and type 5 LSS cannot exist. And whenever a router will become ASBR, which type of LSA it will generate? Type 5. So this is the problem. That's why we cannot connect external domain with R4. With R4. Because the reason is R4 cannot act as a ASBR. Why? Because R4 is a member of stub area. Now, let me know you one thing. Whenever you will try to make a router ASBR which is member of a stub area, that router will give you a log message, error message, that you cannot configure this router as ASBR. This router is not allowed to generate type 5 LSH because this router is member of stub area. This router is member of stub area. This thing is clear to all of you? सबको clear है? पक्का? कि R4 क्या नहीं एक्ट कर सकता? R4 cannot become ASBR. Why? Because we have configured area 1 as stub. Now the problem is we cannot connect area 1 or OSPF domain with new external EIGRP domain. हम अपनी OSPF domain को किससे कनेक्ट नहीं कर सकते? Why? Because area 1 is stub. Because area 1 is stub. Just give me a minute. Hello? देखो. Now the problem is we cannot connect area 1 with external domain because area 1 is stub. Either I have to remove this stub thing, then I can connect, then R4 can act as ASBR. या तो मैं क्या करूं, एरिया 1 को क्या रिमूव कर दूं, स्टब. लेकिन एक प्रॉब्लम आ जाएगी. क्या? इन एरिया 1 एक्सटर्नल एनालिसिस विल बी अलाउड, और जो मैं फिल्टरिंग करना चाहता था वो क्या हो जाएगी, खत्म. जो मैं फिल्टरिंग करना चाहता था वो क्या हो जाएगी, खत्म. एग्री? सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम व्हाट आई विल डू, instead of configuring it as stub, I will configure it as NSSA. Now first thing about NSSA, सब लोग इधर देखेंगे, external LSAs will exist in NSSA area in form of type 7 LSA. Type 7 LSA is called NSSA external LSA. Type 7 LSA is called Type 7 LSA is area. It means it will only remain in which area? NSSA area. Clear? सबको समझ में आया? सबको मतलब सबको. Look here. For some time, just forget this domain. थोड़ी देर के लिए इस डोमेन को भूल जाओ. For few minutes, just forget this domain. Now what will happen? Look here. Let's say this is R1. External domain, let's say here we are running, this is area, this is area 0. Now you have configured this area as NSSA. This router can act as ASBR, but this time it will not generate type 5, it will generate type 7. Clear? In type 7 LSA, information will be network ID,
advertising router, age, checksum, tag, sequence number. Next, root type, N2 or N1. Okay. Whenever normal redistribution took place in case of OSPF, what type of LSA is generated? Type 5. In type 5 LSA, by default root type is E2. Clear? So whenever redistribution is performed in NSSA area, what kind of LSA is generated? Type 7. What kind of LSA is generated? Type 7. And by default root type is N2. By default root type is? What is the by default metric? Who is advertising router? Router ID of ASBR. Router ID of? This thing is clear? Now, R4 will be generating which type of LSA? Type 7. Clear? It will be giving to R3 and R3 will be giving to R2. Clear? Now this router is ABR, yes or no? Yes, sir. Now I just told you type 7 LSA is area dependent. It means it cannot go out of area 1. It will always remain in which area? NSSA area. तो ये area 0 में तो कभी it will never go in area 0. So this is by default nature of ABR, that ABR will type 7 into type 5. So in area 0 which LSA is generated? Type 5. कौन सा LSA generate हो जाएगा? Type 5. Clear? So who is generating type 5 in this case? ABR. I told you, whenever ABR is acting as ASBR, there is no need of type 4. पढ़ा नहीं आपने यार? बताया था एक केस. Whenever ABR is acting as ASBR, in that area there is no need of type 4. You remember? All of you? So in area 0, do we need type 4? No. Because ASBR is present in area 0. Who is acting as ASBR? ABR is acting as ASBR. ABR is acting as ASBR. This thing is clear? दोबारा बता रहा हूँ क्या हुआ. By default we have created which area? Area 1 as NSSA. In NSSA external networks are allowed, but not in form of type 5 LSA, but in form of type. Clear? Now, who will generate type 7 LSA? Better call it. What do you have to call it? NSSA ASBR. Clear? Next thing. ABR will translate type 7 into type 5. It means if root type is N2, here root type will be. If root type is N1, here root type will be E1. Cost 20, cost जो भी cost आएगी वो आगे forward हो जाएगी. Clear? Any problem? Any issue? To anyone? किसी को भी नहीं है ना? सबको समझ में आया? Now there will be a question in your mind. Sir, we are configuring a area as NSSA, stub kind of area, but no LSAs are filtered. Agree? Still, we have got which LSS type 5 in form of. In which form? Type 7. Clear? Now my concern here is, main concern, just look at the diagram. But I told you that we have configured here area from stub to NSSA because I want that ASBR must exist in this area. Yes or no? मैंने इस एरिया को स्टब से NSSA क्यों बनाया? रीजन क्या है? क्योंकि मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे इस एरिया में क्या एग्जिस्ट करे? ASBR. एग्री? यही कंसर्न था ना? Now remember the last case in which with R1 an external domain is connected. R1 के साथ क्या कनेक्टेड होगी? External domain. R1 will be acting as
ASBR R1 will be generating which type of LSA? Type 5. Type 5. R1 will be giving type 5 to whom? R2. R2 will never pass those LSAs in area 1. In which area? Area 1. Area 1 is not stub, it is NSS. मैं सिर्फ पिछले एक टोपोलॉजी को याद करने की बात कर रहा था. अभी भी NSS से एरिया में external LSAs allowed नहीं है. But the thing is, who can exist in NSS area? ASBR. क्या exist कर सकता है? देखो, stub area में ASBR exist नहीं कर सकता, लेकिन NSS एरिया में कौन exist कर सकता है? ASBR. In NSS area, ASBR can exist, but in stub area, ASBR cannot exist. So, guys, the thing is a very easy thing that you have to understand here. If R1 will act as ASBR, अगर R1 किसकी तरह काम करेगा? ASBR की तरह. R1 will generate which type of LSAs? Type. Then also R2 will never translate type 5 into 7 because ABR will only perform one type of translation, that is 7 into 5. It means now also in area 1 type 4 and type 5 LSAs are not allowed. In area 1 which LSAs are not allowed? Type 4 and type 5. What is the benefit of configuring area from stub to NSSA? Because according to design a fucking ASBR is existing in this particular area. इस एरिया में क्या एग्जिस्ट कर रहा है? तभी मुझे इसे स्टब से क्या बनाना पड़ा? NSS से. समझ में आया? So when you can configure an area as stub when no ASBR is existing in that area, but if a ASBR is existing in that area, at that time you cannot configure that area as stub. Because what will be the problem? In stub area, ASBR cannot exist. Because in stub area, which type of LSAs are not allowed? Type 4 and type 5. Clear? So, just to resolve this problem, I have changed my area from stub to NSSA. Because in NSSA area, external LSAs are allowed in form of type 7 LSA. Or you can say in case of NSSA area, ASBR is allowed. कौन allowed है? ASBR. Allowed है? In NSSA area, ASBR will be generating which type of LSA? Type 7. It will be flooding throughout NSSA area. Then ABR will be translating type 7 into type 5. ABR will never translate 5 into 7. Clear? So in NSSA area also type 4 and type 5 LSAs are not allowed. कहानी समझ में आई? ये उतनी बात थी जो हर एक को पता होगी. This particular information will be known to each and every guy who will be studying NSSA area. Now we will be looking something deep shit. अब थोड़ा डीप और चलते हैं. अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? पहले क्वेश्चन को समझना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन दैट आई विल बी गिविंग. क्लियर? तो एक्सप्लेनेशन आप तभी समझ पाओगे जब आपको क्या क्लियर होगा? क्वेश्चन. तो पहले किसको समझना है? क्वेश्चन. कृपया ध्यान दें. ठीक है? बुलाइए उस भाई को. क्या हुआ यार, बात क्यों कर रहा है? नहीं कर रहा. Let's say between R4 and R5 we are running
Now, this is area. This is area 0. अब सबसे पहले बाय डिफॉल्ट केस देखते हैं. व्हाट इज द नॉर्मल केस? दिस राउटर विल एक्ट एज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. This router will generate which LSA? 5 will be flooded throughout. R2 will also generate type 4. R3 will also generate type 4. Both of them will give or define their cost to reach ASBR in which LSA? Type 4. Clear? And R1 will be able to get the cost through 2 also, and let's say 2 to 4 cost is 10. 3 to 4 cost is 20. So R1 will install route via which router? R2 or R3? All of you know the reason why? Because R2 is advertising less cost to reach ASBR. Clear? सबको समझ में आई इतनी बात? ये बातें मैं पहले कर चुका हूँ. सबको क्लियर है? पक्का? Area 0. Let's say this time this area is, this router will act as done. Which type of LSA it will generate? Now R2 and R3 two routers are clear. How many ABRs are there? Now what rule you know? That ABR will translate 7 into 5. ABR will translate 7 into 5. All of you know this rule. All of you. Now, my question is, let's say 500 networks are there. How many networks? 500. How many type 7 LSLs will be generated? 500. How many ABRs are doing translation? 2. 500 into 2. 1000 type 5 LSLs will be generated. Yes or no? Yes. Now, just think about why we were configuring stuff. What the fuck we are doing here? We are doubling the size of database. Clear? हमने स्टफ बनाया क्यों था? डाइपर को लगाते हैं. पता है क्या होता है? तू बात ही ऐसी कर रहा था, चल लगे बना रहा, वही याद आया मेरे को. देखो मैं मजाक कर रहा था, मैं कह रहा हूँ अपने बच्चे की तरह. देखो, why we were configuring stuff, but here we can see if both ABRs will perform translation, my database size will be doubled. Agree? Now, what we will do, just to reduce the amount of database again, there is a rule in OSPF. There is a rule in OSPF. Both ABRs will never perform the conversion. कभी भी दोनों ABR conversion perform, only one ABR will perform the conversion. Now let's say in total there are 3 ABRs. At that time also only one ABR will perform the conversion. Which ABR? The ABR with highest router ID. The ABR with highest router ID. Among, or let's say between R2 and R3, who is having highest router ID? R3. So who will be performing the conversion? R3. Who will be translating type 5 into type 7? Oh sorry, type 7 into type 5. R3. कौन कन्वर्ट करेगा? R3. Who will be translating type 7 into type 5? 7 into 5. Clear? Translate हो गया? Now R1 is getting type 5 LSA from whom? R3. Clear? सबको दिख रहा है? Agree? And one more thing, do we need type 4 in area 0? Why?
ASBR is existing in the same area. ASBR is existing in the क्या मुझे एरिया 0 में टाइप 4 चाहिए? हाँ भाई, क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि R3 ही ASBR है, वो एरिया 0 में एग्जिस्ट करता है. बट एक प्रॉब्लम आ गई अब. What is the problem? कोई प्रॉब्लम बता सकता है? Cost. Now the problem is, if we check the overall cost from R1 to reach R4, less cost is via R2, but conversion is performed by R3. It means if OSPF will rely on the router who is performing the conversion to reach external networks, that can be a longer path also. That can be a longest path also. मैं क्या कह रहा हूं, अगर R1 किस पे रिलाई करेगा? टाइप 5 LSA पे. जो कौन दे रहा है? R3. जो कौन दे रहा है? R3. तो क्या पता वो किस रास्ते से जा रहा हो? बड़े रास्ते से. किस रास्ते से जा रहा हो? Again I am repeating the same thing. If R1 will rely on type 5 LSA given by R3, there can be a chance R1 is able to reach R4 but via longest path. But via longest, because all of you can see in this example shortest path is via R2. इसमें कमी क्या है? What is the problem here? इसको last topology से compare करो. Last topology में, in the last topology, R2 and 3 both were generating type 4 LSA, and they were giving cost to reach ASBR in which area? Area 0. दे रहे थे ना? In the last normal case, both ABRs were generating which type of LSA? Type 4. कौन सा जनरेट कर रहे थे? और R1 को क्या दे रहे थे? They were giving R1 cost to reach, and R1 was able to compare cost given by 2 and 3, because that was the normal case. In that case, R4 was acting as ASBR, but in this case, when we have configured our area 1 as NSSA, in this case, R3 is acting as ASBR. R4 is not acting as ASBR. Clear? सबको समझ में आया केस? अब क्वेश्चन क्या है? What is my question here? How this fucking R1 will get to know that what is the best path to reach original ASBR? Because this is not original ASBR. It is just translating type 7 into type 5. क्वेश्चन समझ में आया? R1 को कौन बताएगा कि भाई असली ASBR कौन है? असली ASBR तक जाने की कॉस्ट क्या है? What is the original cost to reach original ASBR? Because R3 here is not original ASBR. R3 थोड़ा ना ASBR. ASBR कौन है? R4. R3 तो सिर्फ क्या कर रहा है? ट्रांसलेट कर रहा है टाइप 7 to 5. प्रॉब्लम क्या है? R1 के लिए ASBR कौन है? R3. But देखो, for R1 who is ASBR? R3. But R3 is not giving the actual cost. R3 is not giving the actual cost. And if R1 try to reach R4 via R3, it is the longest path. It is the longest path. So to resolve this problem in case of OSPF in type 7 LSA, one more information is added. To resolve this problem in case of OSPF in type 7 LSA, one more information is added. दोबारा बोलूं, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए टाइप 7 LSA में एक और इंफॉर्मेशन को हिंदी में करेंगे, एक और जानकारी ऐड करने को जोड़ी गई है. उस जानकारी को बोलते हैं फॉरवर्डिंग एड्रेस. क्या बोलते हैं? फॉरवर्डिंग एड्रेस. क्या बोलते हैं? फॉरवर्डिंग एड्रेस. कौन से LSA में? टाइप 7. किसमें? डाउट. सिर्फ मेरे एग्जाम्पल को, मेरी बातों को समझने की कोशिश करना अच्छा रहेगा आपके लिए. देखो, नाउ whenever R, देखो सुन तो लो एक बार. Whenever R4 will generate which type of LSA? Type 7. It will add a forwarding address with this LSA.
फॉरवर्डिंग एड्रेस कैन बी, फॉरवर्डिंग एड्रेस क्या होता है सबको समझ में आ जाएगा, अभी 2 मिनट लगेंगे, बहुत फुद्दू सी चीज है, ठीक है। फॉरवर्डिंग एड्रेस कैन बी, LO मीन्स लूप बैक, loop back of R4 advertised in, first preference will be given to loop back, second any interface IP. So either it can be loop back address on R4 or it can be any interface IP, या क्या हो सकती है, कोई भी interface IP, clear? So with type 7 LSA forwarding address is added. Let's say a loopback is present, 4.4.4 is the forwarding address. Clear? Clear? Now R3 is translating 7 into, it will copy forwarding address from type 7 LSA to type, in type 5 LSA forwarding address will be present. It will be done. क्या forwarding address है? 4.4.4.4. Clear? Now there is a rule. There is a rule. Whenever a router is getting type 5 LSA and forwarding address is connected with the LSA, और उस LSA के साथ क्या connected है? Router will try to find a route to reach forwarding address, and with that same path it will be reaching those external networks. Router will try to find a route to reach फॉरवर्डिंग एड्रेस, और वही पाथ किसको रीच करने के लिए यूज करेगा? एक्सटर्नल नेटवर्क्स को। देखो क्या समझो ना यार, एक मिनट अपनी बात पूरी कर लेना, मेरे को अपनी पूरी कर लेना। देखो अब ध्यान से, R3 is translating type 7 into type 5 and R3 is copying forwarding address from type 7 to type 5 LSA. R1 will get type 5 LSA. Now who is ASPR for R1? R3. But whenever R1 will build its routing table, in routing table it has to install those external networks. Agree? Agree? Yes, sir. Now what R1 will do? R1 will check a route in routing table to reach forwarding address. क्योंकि R1 के पास 4.4.4 की इंफॉर्मेशन होगी as a inter area route, as a inter area route. R1 will be getting information about 4.4.4.4 in form of which LSA? Type 3 LSA. Agree? So R1 knows actual cost to reach 4.4.4.4. So the path that R1 will be using to reach 4.4.4.4, the same path R1 will be using to reach external network. तो जब भी आपके type 5 LSA में, whenever in type 5 LSA forwarding address is present, router will never form routing table according to ASBR. It will always form routing table according to forwarding address. So it will always check a route in routing table to reach forwarding address. Clear? And with the path it is reaching forwarding address. Sorry, forwarding address. With that same path it will be reaching external. अब R1 क्या देखेगा कि 4.4.4 पे जाने के लिए बेस्ट पाथ कौन सा है? 2 से या 3 से? कैसे पता चलेगा? टाइप 3 LSA। कौन से LSA से? R1 will be using same path to reach external network. Clear? So forwarding address is present in type 7 LSA just to prevent suboptimal routing. Just to prevent क्या प्रिवेंट करने के लिए? सब ऑप्टिमल राउटिंग। सब ऑप्टिमल राउटिंग क्या होती है? इज अवेलेबल। हमारे पास एक छोटा रास्ता अवेलेबल था R2। इफ नो फॉरवर्डिंग एड्रेस वाज प्रेजेंट, वी विल बी सेंडिंग ट्रैफिक वाया R3। बट इन दिस केस, व्हेन फॉरवर्डिंग एड्रेस इज प्रेजेंट, वी विल बी सेंडिंग ट्रैफिक वाया R2। क्लियर? सबको समझ में आया? आपका केस हो गया क्लियर? समझ में आया क्या?
देखो पहले नॉर्मल केस समझो। नॉर्मल केस में क्या होता है, व्हाट वाज हैपनिंग इन नॉर्मल केस, R2 and R3 both were generating type 4 LSA in area 0 just to tell their on cost to reach ASBR. So R1 can compare the cost which is the shortest path. This is the normal case. Clear? Second thing, when you were configuring area 1 as LSSA, in that case R4 was generating which type of LSA? Type 7. R2 and R3 will be translating, or R3 will be translating? Only R3. Type 7 into type 5. Next thing. Forwarding address will be added with type 7 LSA just to prevent suboptimal routing. क्या prevent करने के लिए? Clear? So whenever type 7 LSA is generated, a forwarding address will be present in that type 7 LSA. That forwarding address will be copied in type 5 LSA. Because there can be a chance that how many ABS are existing? 2. How many ABS are existing? 2. Clear? सबको समझ में आया? हाँ. सपोज ये एरिया की नहीं है और वो एरिया 0 है, एरिया 1 है, और ये टाइप 3 LSA फॉरवर्ड कर रहा है, तो अगर इधर 500 है, इधर भी 500 है, फिर से 1000 हो जाएगा ना। तो सेम कॉन्सेप्ट इसमें नहीं होगा, मतलब उसमें डेटाबेस बड़ा नहीं होगा। देव का फोन आया। हाँ भैया, आप क्या कह रहे हो कि इस एरिया 1 में कितने नेटवर्क्स हैं? 500। हाँ, इस एरिया 0 में कितने नेटवर्क्स हैं? तो 500 इधर आ जाएंगे, टाइप 3 बन गए, टाइप 3 बन गए, इधर चले जाएंगे। 1000 हो जाएगा ना। जैसे इसमें ऑप्टिमाइज करने के लिए, मतलब डेटाबेस कम करने के लिए हमने R3 नहीं, आप कंसर्न गलत समझ रहे हो। देखो, अगर मेरे पास इसका कंसर्न, आपको क्वेश्चन समझ में आया क्या कह रहे हैं? अरे नहीं कर दो, ये पता क्या कह रहा है? ये कह रहा 2 ABR है, ठीक है। टाइप 3 भी कितने होंगे? 3000 हो जाएंगे, ठीक है ना? तो एक बात बता, जिस टेल मी वन थे, वो तो पहले भी होते थे, वो तो पहले भी होते थे। Now, just tell me one thing. Try to understand my concern now. How many ASPRs are actually there? एक ही तो है, R4. So how many external LSA do you expect? Only one copy. If both ABR will perform translation, how many copies will be there? 2 copies. Double copies. Copies will be double. So just to remove that thing, what we have done, there will be an action. The router with highest router ID will perform the translation. हाँ. ये इससे ये करके हमारा डेटाबेस कम हो रहा है, मतलब ट्रांसलेशन करके कम हो रहा है। मैं ट्रांसलेशन अगर नहीं करता, if I will not perform the translation, how external network information will go in area 0? सर सपोज दोनों अगर फॉरवर्ड 7 to 5 कर रहे हैं तो 1000 हो जाता ना, तो दोनों करने के बदले एक को करने दे रहे हो ताकि कम हो जाए, क्योंकि एक ही है। एक्सटर्नल से है कितने? एक, तो करने भी कितनों को दे रहे हैं? एक को। हमारा स्टेप बनाने का लॉजिक क्या था? 4 और 5 को फिल्टर करना, अभी भी फिल्टर है, लगी? तो मैंने एक से ट्रांसलेशन क्यों करवाई? क्योंकि अंदर से नहीं कितने? एक को तो कभी भी नहीं बनाऊंगा, इंक्रीज भी हो जाएगा डेटाबेस। और बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट क्या होगा? कोई बेनिफिट नहीं होगा। If both of them will perform the translation at that time also there will be no benefit. क्योंकि सब ऑप्टिमल राउटिंग तो मैंने किससे प्रिवेंट कर ली? फॉरवर्डिंग एड्रेस से। तो दोनों को ट्रांसलेशन करने की जरूरत है ही नहीं। क्लियर? हाँ जी।
All of you can see this diagram. अब देखो यार यहाँ पे ध्यान से, मैं क्या करूंगा, आई विल बी कॉन्फ़िगरिंग एरिया 1 एज NSSA. So what will happen? R1 will generate which type of LSA? Type 7. That will be flooded throughout area 1. R3 or R4 which are acting as ABR. Who will be translating type 7 into type 5? R4. So in area 0 who will be generating type 5? R4. Clear? Now in area 0 दिखाऊंगा आपको, forwarding address will be present in which LSA? Type 5. Which was copied from which LSA? Type 7. Type 7. तुम भी थोड़े घसड़ू थे, मैं भी सब देखा रहा, हम चुप रहे. ध्यान से देखना आप, ध्यान से मतलब ध्यान से. Show IP protocols. On R1 how many areas we are running? एक ही एरिया और वही क्या है? नॉर्मल. क्लियर? Show IP OSPF. On R1 we are running RIP also and we are running OSPF also. R1 is getting some RIP routes from external domain, yes or no? All of you can see? Router OSPF 1. Redistribute RIP. Which keyword I have to add? Clear? This time R1 will be start acting as, ये नॉर्मल केस दिखा रहा हूं पहले. R1 क्या बन जाएगा? ASBR. Clear? So R1 will be generating which type of LSA? Type 5. Flooded throughout OSPF domain. Both ABRs will be generating which type of LSA? Type 4. Just to give information about ASBR in which area? Area 0. Clear? ये नॉर्मल केस सबको पता है? Now I will be configuring area 1 as, how we will configure? Area 1. Area 1. कॉन्फ़िगर कर दिया एरिया 1 पूरा NSS से. नाउ show IP protocols. How many areas we are running on this router? And that area is clear. Whenever we are configuring a NSSA area, this router is generating which type of LSAs? Type 7L LSAs are specific to which area? Area 1. Who is generating type 7 LSA? R1. R1 is ASBR. R1 is ASBR. सबको दिख रहा है? चले आगे. R1 is ASBR. चले आगे. नेक्स्ट थिंग,
Now move to ABR1. Move to ABR2. It is a performing type 7 to 5. Clear? Who is performing type 7 to type 5 translation? ABR2. Look here. Type 7 LSAs were generated by whom? R1. Type 5 LSAs are generated by whom? R4. It means R4 is translating type 7 into type 5. Clear? Yes, sir. It means in area 0, which type of LSAs you will see? Type 5 generated by whom? R4. Clear? Now the problem is, if R6 want to reach R1, which path it will use? Path via ABR2 or ABR1? So to decide that thing, whenever R1 will generate type 7, show IP OSPF database NSSA external, we always check LSA using link ID. I am telling you this thing around 100 times. I have told you this thing. 172.168.1.0. This is network ID. Subnet mask, metric type is by default. Check the forwarding address. Loopback present on R1. Loopback present on? Clear? And this loopback is advertised in OSPF also. ये loopback किसमें advertised है? OSPF में. That's why this IP is acting as forwarding address. किसकी तरह काम कर रही है IP? Clear? Now ABR2 is translating type 7 into type 5. Check here. ABR2 पे चेक करो, टाइप 7 भी है और 5 भी है. Show IP OSPF database NSSA external 172.168.1.0. Forwarding address is present? Yes or no? Now I am checking type 5 LSA. Still you can see what is present. Forwarding address. Now try to reach R6. On R6, if you will check database, type 5 LSA, what is present? So to reach this external network, which next hop R6 will use? It will check routing table to reach which network? Forwarding address. Forwarding address पे जाने के लिए कितने रास्ते हैं? 2. कितने रास्ते हैं? It is getting information about forwarding address in which LSA? हाँ जी. कौन से LSA में मिल रही है इसको? टाइप 3 में. किस में मिल रही है? टाइप 3 में. So to reach external networks also, how many paths it will be having? कितने पाथ होंगे? 2. देख सकते हो? Clear? You can see to reach external networks also, how many paths are present? Clear भाई? Yes, sir. And to reach this forwarding address network, how many paths are there? 2. Now check from the perspective of R5. Look here. By default, who is performing translation? ABR2. So R5, when R5 want to reach external networks, which path it will use? ABR1. Why? Look here. R1 is having which type of database? Type 5 LSAs. Agree? In type 5 LSAs, what is present? Forwarding address. Present है? So R5 will check its routing table. What is the path to reach forwarding address? So R5 is using which way to reach? Which way to reach forwarding address? ABR3. So it will be using same way to reach which networks? External networks. Clear भाई? सबको दिख रहा है?
तो कॉस्ट किसकी हेल्प से कैलकुलेट करते हैं? फॉरवर्डिंग एड्रेस की हेल्प से. द राउटर्स which are not member of NSSA area, in that area how routers will get to know that what is the actual cost to reach actual ASBR. Those router will get to know about the cost with the help of forwarding address. अगर मैं आपको सच बताऊं ना, तो in area 0 no router knows this thing that R1 is actual ASBR. किसी राउटर को ये पता नहीं है कि एक्चुअल ASBR कौन है. स्टिल दे आर बिलीविंग हु इज एक्चुअल ABR, R4. बट टू रीच एक्सटर्नल नेटवर्क्स दे आर यूजिंग विच पाथ? द सेम पाथ दे आर यूजिंग टू रीच फॉरवर्डिंग एड्रेस. तो सारा खेल किसका है इसमें? किसका है? बात समझ में आई सबको? Let's move to both ABRs. मैं ABR 1 पे आ गया हूं. राउटर OSPF 3 एरिया 1 NSS से this command we were running. ये इलेक्शन वाला जो है ABR का, ये सिर्फ NSS में ही है ना? यार देखो, तुम ना थोड़ा इससे सोचो एक बार. देखो मैं क्या बोल रहा हूँ अब. इफ इन नॉर्मल एरिया कभी ट्रांसलेशन होता? फिर नहीं. देखो यार, नॉर्मल एरिया, जब भी नॉर्मल एरिया होगा, टाइप 5 LS से कौन जनरेट करेगा? ASBR. इज देयर एनी नीड ऑफ ट्रांसलेशन इन दैट केस? हाँ, टाइप 3 में भी तो डेटाबेस बहुत हो सकता है ना. अब मेरा कंसर्न है इसमें, अगर आपके पास 2 ABR हैं, it means you are providing redundancy for ABR. Now try to understand my concern. If I have this kind of rule, like only one router will generate type 3 LSA at that time, if that router will fail. तो सेम तो फिर अगर टाइप 7 में अगर वो R4 डाउन हो गए तो फिर 7 में फिर घसुड़ो वाली बात, R3 ट्रांसलेट करने लग जाएगा. बस ये होगा. कौन ट्रांसलेट करने लग जाएगा? R3 will start generating the same thing. 2 ABR बनाने का लॉजिक क्या था? रिडंडेंसी मिल रही है मेरे को दोनों केसेस में, टाइप 3 की भी और टाइप 5 की भी. देख सकते हो आप. ये कमांड आपको चलानी नहीं है. यू डोंट हैव टू रन दिस कमांड. R5 is using which path now? R5 किसके थ्रू जा रहा है? ABR 2 के थ्रू, क्योंकि कन्वर्जन कौन परफॉर्म कर रहा है? Now what I have done, look here. सब देखो मैंने किया क्या. अब मैंने अपने ABR को बोला you have to translate type 7 into 5, but you don't have to forward the forwarding address. So now in area 0 all routers are getting type 5 LSA but without forwarding address. So when no forwarding address is present, all routers will reach external networks using ASBR. Using? Or now you can see R5 is able to reach 170 to 168 1.0 network, but via which router? यार देखो ना यार, R5 6 के वाया रीच कर रहा है. क्यों? Who is generating type 5 LSA? ABR 2. What is the less cost? Which path is having less cost from R5 to ABR 2? This path. इस पाथ की कॉस्ट है ना लेस. ठीक है, तो कौन सा पाथ यूज कर रहा है? ये वाला. क्लियर? इन दिस केस इन एरिया 0 नो राउटर नोज
व्हाट इज, वो तो पहले भी नहीं पता था. What is actually? What is the actual cost to reach ASPR? किसी राउटर को नहीं पता ये बात. क्यों नहीं पता? क्योंकि हमने फॉरवर्डिंग एड्रेस को क्या कर दिया, सप्रेस. क्या कर दिया? मैंने आपको सप्रेस करके क्यों दिखाया? जस्ट टू मेक श्योर दिस थिंग दैट यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग. समझ में आया? जैसे मैंने फॉरवर्डिंग एड्रेस को क्या कर दिया, सप्रेस. बात कैसा हो गया? चेंज हो गया. क्यों चेंज हुआ? Because this time router will be reaching external networks using which router? ASPR. Using which router? ASPR. Because there is no forwarding address. Because there is no. Clear भाई? It's very easy guys. Fine. समझ में आया था ना? हाँ लौट ले, तो घूम गया दिमाग. सही है, चल ठीक है. हम भी यहाँ मौजूद थे, हमने भी सब देखा रहा. देखो, look here guys. समझ में आया? टाइप 7 एलएसए का नेचर कम ही लोग समझ पाते हैं इसको. ठीक है जी. फिर भी आपको बता दिया है. फॉरवर्डिंग, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड फॉरवर्डिंग एड्रेस? वी हैव डिस्कस्ड ऑल दैट शिट. सो नाउ सेकेंड थिंग, लास्ट टॉपिक. नहीं यार, OSPF में तो सारे टॉपिक मुझे भी नहीं आते यार. टोटली अननेसेसरी. ओए बात मत कर यार. 1 now we have discussed here our external domain is connected, which is this is area 1 is NSSA. This is area. This is which domain? Clear? देखो अब R4 will be acting as, will be generating, R2 will be translating, carrying. Clear? Now R1 will also act as, will be generating, but in NSSA area 5 and 4 are, or you can say ABR will never perform 5 into 7. Clear? Now the problem is how information of these external networks will be present in area 1. प्रॉब्लम आ गई दोबारा. मैंने एक साइड से तो अलाउड कर दिया, दूसरी साइड से क्या हो गए? फिल्टर. आई हैव अलाउड देम फ्रॉम वन साइड, बट एक्सटर्नल LSAs आर फिल्टर्ड फ्रॉम अनदर साइड. दूसरी साइड से क्या हो गए? फिल्टर. सो टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम वी हैव टू कॉन्फ़िगर दिस एरिया एज टोटली. What will happen in case of totally NSSA? अरे चुप रहो ना, इधर सुन लो. R2 will generate in form of type in which area? In area 1. Clear? Just to provide reachability for external networks. क्या जनरेट करेगा? एक डिफॉल्ट राउट प्लस एज टोटली कीवर्ड इज एडेड. इट विल फिल्टर इंडिविजुअल टाइप 3 LSAs. ये खाना कौन खा रहा है भाई? filtering
individual type 3 LSS in which area? Area 1. So याद रखना, whenever in real time scenarios two external domains are present on both sides of OSPF domain, we have to configure area as totally NSSA. We have to configure area as clear. In totally NSSA, ABR will be generating a default route in form of which LSA? And plus as totally keyword is added, which LSS are filtered? Type 3. Which LSS are filtered? सबको समझ में आया? कौन से एरिया से फिल्टर हो जाएंगे टाइप 3? एरिया 1 के कहाँ नहीं जाएंगे या 0 के 1 में नहीं आएंगे? सर 1 का 0 के 1 में नहीं आएंगे और R डिफॉल्ट गेट ले जाएगी। 1 के टाइप 3 0 में जाएंगे, लेकिन 0 के टाइप 3 1 में नहीं आएंगे। क्लियर? आपको बताया था लास्ट टाइम भी, whenever you are configuring an area stub, the area which you are configuring as stub or totally stub, in that area LSS are not allowed, but still they can go out. Clear? So guys, look here. Now R5 is using shortest path to reach R1 because forwarding address is present in type 5. LSA you can see here, what is present? Forwarding address. देख रहे हैं सबको? Now guys, whenever you have to configure totally NSSA from NSSA, we just have to run one more command only on ABR. On which router? Stub से totally stub बनाते थे, extra command किस पे चलाते थे? क्या command थी? The same thing we will be doing here. Done? Done. Now this area is totally stub. So if you check on R1, you can see here what we are getting. All type 3 LSS are filtered. सारे type 3 भी क्या हो गए हैं? Filtered. It means whenever any router which is existing in area 1 want to reach these external networks, they will be using this default route generated by R3 and R4. Clear? This time area 1 is totally NSS. क्लियर भाई? तो टोटली NSS से क्यों बनाते हैं? हाँ भाई चिकने तू बता, सो तो रहा है तू? क्या बोला है आप समझाना? आंधी आ रही है? हाँ भाई ध्रुव, why we configure area as totally stub? क्या आ सके? So that users in area 1 will be able to reach those external networks. That's why we configure area as totally stub. कि जो राउटर्स हैं एरिया 1 में वो कहाँ रीच कर पाए? Which are existing in which area 0. क्लियर? समझ में आया भाई? कुछ मुश्किल है इसमें? सिंपल सी बातें हैं यार। समझ में आया इतना? स्टब समझ में आ गया? टोटली स्टब एनएसएस से, टोटली एनएसएस से। कल टेस्ट लूंगा इसका, ठीक है?
कल। चले आगे। तो लगभग OSPF कंप्लीट हो गया हमारा। ऑथेंटिकेशन करवा देता हूँ, रहती है जो छुपा लिया मैंने, बताया नहीं जान के, नहीं होता। डिफॉल्ट रूट जनरेशन भी नहीं कराया ना OSPF में, कल करवाऊंगा। फ्रेम रिले भी नहीं कराया ना। रीडिस्ट्रीब्यूशन तो यार बताया तो था, OSPF EIGRP का एक साथ करवाऊंगा, एक दिन लगेगा उसमें तो। OSPF में उसमें आएगा ना, फ्रेम रिले में। So how to configure authentication in case of OSPF? Look here. I am configuring authentication between R1 and R3. ओए शांति रखो यार, क्या है? ओए क्या नाम है तेरा? आलोक से जो पीछे बैठा दोस्त, क्या डाला हुआ था इस भाई ने फेसबुक पे, बताता हूँ अभी। लुक फिट फक स्किनी, ऐसे ही था ना भाई? कौन कह रहा था स्किनी होने के लिए वैसे? राउटर OSPF 1। Whenever in case of OSPF you have to apply authentication, OSPF supports two types of authentication, basically three types: null, plain text, MD5. Fine. Whenever you have to configure plain text authentication, this is how you will configure. Go to your interface, IP OSPF authentication. This command will enable plain text authentication on the interface. ये command क्या करेगी? Now IP OSPF, define your key. Your key is Cisco. Done. Do show IP OSPF interface fast Ethernet 0/0. On this interface, which authentication is enabled? Simple password. Clear? अब ABR 1 पे भी अप्लाई कर दें। IP OSPF key Cisco. You can see here neighborship is why? Reason is mismatched authentication. Mismatched. Now neighborship is again up. Clear? This is how you will configure plain text authentication. Let's say between R2 and ABR2 you have to configure MD5. This is how you will configure. IP OSPF authentication, message digest. This command will enable MD5 authentication on the interface. IP OSPF message digest key. This command is used to define key at the time of MD5. Which key ID you want to use? 1. MD5. Password. देखो तुम्हें एक बात बता रहा हूं, हमेशा याद रखना। आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ की मस्ट मैच, और ये लॉजिक नहीं पता मुझे, चेक कर लेना बुक में। की दोनों पे मैच होनी चाहिए या फिर नहीं, की शुड मैच और नॉट। आई डोंट रिमेंबर द थिंग, प्लीज चेक इट इन योर बुक्स प्लीज। बट ये नेबरशिप क्या हो गई है मेरी? Show IP OSPF interface FN 0/0. Which authentication is enabled? Which key ID we are using?
पे लगा दी गलती से। IP OSPF डन। On both the ends we have configured the enable to, दिख रहा? So this is how you can configure authentication, MD5 or plain text. So tomorrow I will be discussing 2 points: how to generate default route in OSPF, and second thing, how different network types will work in case of OSPF. Different network type means कल OSPF खत्म हो जाएगा, परसों redistribution, उससे अगले दिन से क्या स्टार्ट करेंगे? BGP. Null means no authentication. Null means no authentication. You know विभूति जी from भाभी जी घर पर है. He is Nalla.